Okay, sir. So just let me know if the screen is visible. Okay. If you see my Revit screen, just let me know. It's visible, right? Visible, sir. Okay, fine. So Aldrin, so far we have done this thing. In the last class, uh, we saw how to prepare a BPS, bar bending schedule, right? And before that, we also prepare quantity takeoff, right? So in today's class, I'll show you how to prepare a sheet. For example, your model is ready in all respect, right? If your model is ready with reinforcement, with modeling and all architectural things, each and everything is complete. Now you want to prepare the drawings. How you prepare the drawings? That is what I will tell you today. Although I have covered this earlier as well, but no worries. I'm again explaining this thing. Okay. So Okay, sir. this is my Revit screen. Okay. And let me open the PPT as well. I'm sharing PPT with you all. Okay, just download those PPTs and keep in your database because you can refer these PPTs in case in the future, right? O- Okay, sir. Hmm. Can you see the screen? Yes, sir. Sheet creation in Revit. See, this is one of the sheets which has been created in the Revit. This is cover sheet basically. Okay. So Okay. you can prepare these kind of cover sheets, or Mhm. basically we will see for example, you have created a 3D model, you have created each and everything in 3D, but exactly your boss is going to ask, okay, Aldrin, we have to send drawings at the site. So where are the drawings? Okay, the Mhm. ultimate output should be your drawings, whether it should be 3D modeling drawings, whether it is representing your 2D drawings, I mean 2D details, but ultimately the final output should be in the form of drawings, right? Okay. So now, for example, you have created your model, you have, modeled the reinforcement, and you have created your this schedule as well. Okay. But finally, Okay. when you complete all these things, now the ultimate thing which is required is your drawing output, how to create drawings or sheets, right? So we will see how Yeah. to create these. These are the do's and don'ts. You are already aware by now. There's no need to explain again and again. Okay. Okay, So sir. what we have seen in the last session, introduction to a power bending schedule. New schedule we have created. Okay. New calculated parameter reinforcement weight. Okay. And then we also saw the images of the bars. For example, if there is, a bar, C-type bar. Okay. So there was the image of this kind of bar. You might have seen. Okay. Okay. If there is an L Yes. bar, it was there. The Mhm. length was there. This length was there. This length was there. And then this length was there. So we have seen that as well. Okay. That was our previous lecture. Correct. And then Correct. let's see what is today's agenda. So we have creating a new sheet. We will create a new sheet. Okay, we will Correct. add, we will add a desired title block or template. For example, sometimes you need to create A1 size drawing. Sometimes you want to work on A0, A2. So you can choose accordingly. Okay, there are Mhm. already built up, already built in title blocks are there. Templates are already there in the Revit.
Or if you want to develop your own template, that is also possible. But there is no need to develop your own templates because already templates are there in Revit. Okay. Editing, how do we edit title block? How do we add our own details? Right. But company has individual title block, right? Yeah. Yes, yes. That is why I'm saying now you can also develop your title blocks. Okay. Mhm. And if you want to use the existing one, you can edit them. You can paste your, you can add your logo of your company and then project name and then title style and all you can change. And if you want to develop your own, you can develop that as well. Okay. 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 Adding views, how we can add views in sheets, adding labels and logos in title blocks. Okay. And then question answer. Post that we'll see. So first of all, we'll see creating a sheet. How do we create a sheet? Open the Revit project file from the project browser. Project browser is on the right hand side. Properties palette is on the left hand side. You are aware by now. Okay, there is no need to explain over in time again. Sheets, you need to go to the sheets tab, then new sheet, and then we have to load the sheets. Okay, title block, click open, select A10, whatever size you want to work on. You can select that title block or title sheet. Okay, right click on the sheet that was created. Okay, and then you can rename that sheet. You can also give the name. You can also provide the number to that sheet by right clicking. You can update the sheet name and number from title block or from the properties. Right. So this is the workflow. These are the snaps. We need to go to the, project browser. And when you go down, when you scroll down, you will find Sheets tab. Okay. You need to click right on the sheets and then you have to select the sizes of the title blocks or the template. Okay. And then uh, once you select that, then press OK. Then a new sheet will be created. Now, let me take you let me take you to the Revit so that it will make more sense for you. Right. So for example, level one, this is our level one. Okay. For example, this is complete. We do not want, I mean, it is complete. For example, let's suppose, then we have level two. This is our level two. Okay. Level. Then we have level three. That means our levels are almost ready. Okay. Why these background? We can see the AutoCAD drawings in the background, so we can always hide them. How we do hide them? I told you VG is the shortcut. V for victory, G for Gurgaon. VG. Okay. VG. Okay. I'm telling you. Just do not forget Visibility this. graphics. V Okay. visibility graphics. Okay. VG is the shortcut. Okay. Just press VG. Okay. Just press VG and then just a wait. Let me. Yeah. So once you press VG, go to the imported categories. Okay. Go to imported categories and then you can just uncheck this import in families. When you uncheck this, that means your drawings will be gone. If this is not gone, again go to VG. Okay. Then you need to hide, uncheck all these drawings. Okay. Then it will be not available. Okay. So this is how, if you want to see again, you can press VG and then you can again check all those. Okay. So you can always hide whenever you are modeling. At that moment you required it. Once you complete your modeling, then you can hide them so that it will be visible properly. Right. So Yes. these plans are ready. Okay. Plans are ready. So every time when you go to each and every floor plan, you have to hide them. Because if you remember, we have, inserted at each and every floor when we were modeling. If you remember, हमने क्या किया था? हमने हर एक फ्लोर पर इसको इंसर्ट किया था. ठीक है. इसलिए ये हर फ्लोर पर विजिबल है. राइट. सो या अलग अलग फ्लोर पे है. सो वी नीड टू हाइड देम एट ईच एंड एवरी फ्लोर. और एक चीज क्या होती है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट रैपिड.
If you are making some changes for this level 4, हम्म। those changes are specific to the view. Those will be अच्छा। only applicable to the plan only. If you are hiding something, let's say I have hidden drawings here, but these are visible over here. So every हाँ floor हाँ। plan, every view, every section has its own settings. These settings are not अच्छा। global, these are local settings. Are you अच्छा getting me? एवरी। हाँ, अगर आपने कोई सेक्शन कट किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, हाँ। दिस इज योर नॉर्थ व्यू. इस व्यू हम्म। में यू वांट मेक सम चेंजेस, यू वांट टू हाइड ग्रिड्स, यू वांट टू हाइड लेवल्स. तो दैट डजंट मीन कि वो सारे व्यूज में, सारे एलिवेशंस में विजिबल, आई मीन सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी. नो, दीज आर ओनली व्यू स्पेसिफिक सेटिंग्स. ठीक है? अगर आप इस व्यू में ग्रिड को हाइड करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सारे व्यूज में हाइड हो जाएंगी. नो, यू हैव टू गो टू द साउथ व्यू अगेन, यू हैव टू चेंज द सेटिंग्स ओवर देयर इटसेल्फ. ठीक है? ठीक। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं मतलब ये हर कहना, लेवल पे हमें वो करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा, विजी करना पड़ेगा। वीजी करना पड़ेगा. ठीक है? और इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल परमानेंट हर व्यूज से गायब हो जाए, एक तो बार में। एक बार में तो वीजी में ही एक अलग ऑप्शन होता है, एनोटेशन कैटेगरी. यहाँ अच्छा। पर अगर जाएंगे एनोटेशन कैटेगरी में, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्रिड्स, इफ यू डू नॉट वांट टू हैव ग्रिड्स, तो आप ग्रिड्स को वहां हम्म। से ऑफ कर देंगे, तो फिर वो सब जगह से ऑफ हो जाएगा, फिर वो आपको कहीं भी विजिबल नहीं होगा. ठीक है? अच्छा। हाँ. ठीक है गया? ओके। हाँ। और सभी लेवल पे अभी गायब हो गया नहीं? हाँ, लेवल पे गायब होगा उस वाले पर्टिकुलर व्यू में. इस हाँ। व्यू में आप कभी भी किधर से भी घुमा के देखोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, बट दूसरे वाले में जरूर दिखेगा. ठीक है? ये अच्छा, मैं दूसरे समझा, वाले में। मतलब हर एक सेटिंग जो है वो हर एक पर्टिकुलर व्यू के लिए एप्लीकेबल है. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. अच्छा। ठीक है? ठीक। आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज के वंस वी आर डन विद अवर मॉडलिंग, हमारे प्लान्स रेडी हो गए. ठीक है? हमने प्लान्स बना लिए, हम्म। अब हमें शीट्स जनरेट करनी है. तो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि शीट्स कहाँ होती हैं. शीट्स आर हियर ऑन द प्रोजेक्ट, इन द प्रोजेक्ट ब्राउजर, राइट हैंड साइड. इस पर आप राइट क्लिक करिए, न्यू शीट सेलेक्ट करिए. व्हेन यू सेलेक्ट न्यू शीट, दिस विंडो विल पॉप अप. ओके? देन यू हैव हम्म। A1 metric, A4 rebar schedule, none. Now, for example, you want to work on A3 size. A3 size तो हम्म। available नहीं है यहाँ पर. So what we gonna do? We will go to load. Okay? लोड में हम ओके। जाएंगे. लोड में जाने के बाद there are two possibilities. जब आप लोड करोगे तो आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट, एक तो हो सकता है आपको जो रेविट की लाइब्रेरी है, इट विल टेक यू टू द रेविट लाइब्रेरी. ओके? और द अदर यस। पॉसिबिलिटी इज दैट it will take to you to the your local files. So you need to be careful, you need to understand this. If you are not able to see the library, Revit library, then you have to go to the C drive. Go to C drive, then look for the program data. Okay? Program data. Then you have to go to Autodesk. Okay? And then you have to look for Revit 25. Okay? And then you have libraries over here. Libraries, you have to choose English, US. Okay? Root analysis, structural analysis. And then you have annotations, title blocks, right? So यस। ए title ए block you फोर have A3, 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 हम्म। A3, A4, A3. Right? These type of title blocks are there. Again, we will explore some more title blocks. Uh, Viewport. This is viewport, schedule, title block, symbols, profiles, annotations. Let us explore annotations. These are annotations. These are of no use. So again, going back, that means you will find some title blocks over here, A3, A4. Okay?
and then let us Okay. explore some more. Maybe root analysis. No, we do not have. Okay, no problem. I'll go back. English Imperial. Let us check English Imperial as well. Structural podcast. This is horizontal 11 by 17. This is imperial units. This is in centimeter, right? हम्म. Okay, because imperial units, right? So ये we तो can ए choose फोर में है. no, no, it's A3, I think. Yeah, it's A3. 11 by ए 17 is A3, I think. No? थ्री. नो नो. 297 by 410, I think so. I'm not sure. Let us check. I mean, we need to check it. So what I was telling is, if your rabbit थर्टी is not फोर बाई direct, सेवेंटीन में. 34/17 वो आपका ए थ्री में आएगा शायद. so this is A4. लाट. This is A4, that means, right? So what I was यस. telling basically, I was telling, if your rabbit is not directly taking you to the library, then you need to go to C drive. Okay. ओके. Let me tell you. You should note down this. If you not, I mean, you will not remember this. Just 1 second, Miss Kaur. ओके ओके. Yes, Alden. यस सर. हाँ. So C drive में, first of all you go to C drive, then program data, PD. Note it down somewhere else. ठीक है. Program data ओके. में you have to go to Autodesk. हम्म. Autodesk, ठीक है. Then ओके. उसके बाद Autodesk के बाद Revit, जो भी Revit आपका है 2025 और 2024 हम्म. whatever. Then again libraries. Okay, ओके. libraries, and then English. Okay, and then you will find title block. तो वहां से you can choose. और इट मे बी पॉसिबल डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली समटाइम्स, आई मीन उसको पाथ देने का जस्ट इट इज जस्ट जस्ट काइंड ऑफ पाथ उसको क्या दिया है आपने, लास्ट पाथ क्या दिया है, अगर आप हम्म. किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर वो रहे हो तो डिफॉल्ट खुल जाएगा फिर तो हाँ वहां से डिफॉल्ट डायरेक्ट. प्रोजेक्ट, एग्जैक्ट एग्जैक्ट. ठीक है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव गॉट दिस. नाउ आई एम गोइंग देयर. एंड टाइटल ब्लॉक में लेट्स से मैं A3 का कोई भी एक चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल. देखते हैं क्या यहाँ पर आ गया. ठीक है. ए थ्री आ गया. एंड ये इसमें कुछ व्यू पोर्ट्स ऑलरेडी एडेड है आई थिंक. ठीक है. ओके. और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट. हम्म. ओके. वर्टिकल फॉर्मेट इज ऑल्सो पॉसिबल. जस्ट वेट, आई एम इन रूम. वर्टिकल फॉर्मेट मतलब पोर्ट्रेट वाला कहना चाह रहे हैं. पोर्ट्रेट वाला, पोर्ट्रेट नहीं, आई मीन जो मार्जिन होता है हमारा जनरली वी कीप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना, राइट हैंड साइड अच्छा नोट्स अच्छा. एंड ऑल. हाँ हाँ. दिस ये हाँ. लोगो एंड ऑल. ठीक ठीक ठीक. दिस लोगो जो एंड सी ऑल. डब्ल्यू सी यूज करते हैं. जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो सी डब्ल्यू सी अपना टेम्पलेट जो यूज करते हैं. दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस हाँ जो हाँ. जनरली हम यूज ये करते हैं, राइट राइट साइड मार्जिन एंड ऑल. बिल्कुल. ठीक है ना. बिल्कुल बिल्कुल. सो हाँ. ये हम कर सकते हैं. निपुण, हैव यू जॉइन निपुण?
Just wait, huh? Let me take him inside. ओके सर। Hello, hello, Nipun. Yes, have you joined? Hello. हेलो। हाँ सर। आ रही है बस? हाँ आ रही है, जस्ट ज्वाइन किया है सर। ठीक है, ये ओके। ओके, चलो। So, this is the thing. This is basically, let me tell you, uh, I was talking about this, margin. Generally, we follow this standard, na, यस सर। right? हाँ, ये जो राइट यस। साइड में हम नोट्स एंड ऑल वी एट दिस, एंड ये हमारा बॉटम में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा व्हाट इज दिस, यू नो मार्जिन एंड ऑल, नोट्स और ये वगैरह हमारे। नेविस वन की क्लास है, नहीं रेविट नहीं, की दिस है। इज दिस इज रैबिट। अभी एक आध क्लास जस्ट लास्ट है, इट इज अबाउट टू फिनिश। वी विल बी स्टार्टिंग नाविस ठीक। मे बी नेक्स्ट संडे, तो कर लो, तुम अटेंड कर लो, डोंट वरी। ये तो तुम्हारा एक्स्ट्रा बोनस है, जस्ट नो, इट विल बी रिपीटेड बेसिकली फॉर यू, राइट? ठीक है। ओके, just try to understand. It is very simple topic. How do we create sheets? हम शीट्स, जब हमारा मॉडल कंप्लीट है, सारी चीजें कंप्लीट होगी, तो नाउ हमें अब हाउ डू प्रिपेयर शीट्स जो हमें साइट पे भेजनी है या शेयर करनी है, ठीक है? सो दिस इज प्रोजेक्ट ब्राउजर ऑन द राइट हैंड साइड। इसमें हमारे पास शीट्स का ऑप्शन होता है यहाँ पर, एंड देन वी नीड टू राइट क्लिक ऑन दिस, एंड दिस इज न्यू शीट। जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर A3, A4, A1 कुछ साइजेस ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ ये सर यू वांट, अपने आप डिफॉल्ट आ गया क्या? क्या? ये जो आपने सीट जब लगाया ये अपने आप आ गया? मैंने यहाँ पे अभी लोड किया था ना, आई हैव जस्ट लोडेड ना स्लैब A3 दिस वन। ओनली सीट आपने लोड किया राइट? यस। उसके सेक्शन जो साइड साइड में आ गया वो अपने आप ना लग ना ना गया? ना 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 ना, दिस वाज डिफरेंट, दिस वाज डिफरेंट। अच्छा मैंने अभी ये दूसरा है। वाला, दिस आई हैव अपलोडेड दिस ना, ये मेरा अच्छा पहले अच्छा। का, ये पहले का है। अच्छा। ये अच्छा पहले, पहले ये का ये दिखा। यही मैं नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम ओके शीट ओके। को अब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? सो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने समझाया कि हाउ टू डाउनलोड, आई मीन आप कैसे हम्म। वहां से लेके आएंगे शीट को, एज पर योर रिक्वायरमेंट, A1 साइज, यस। A2 साइज, A3 साइज, राइट? हम्म। नाउ फॉर यस। एग्जांपल, again I am creating a new sheet and I want A1 metric, for example, sorry, uh, A1 metric, okay, now it is A1 size, right? यस। Now, for example, you have to prepare a sheet which shows your floor plan and your some cross sections, maybe some L section, cross हम्म। section, detail of a column and all. ये सारी चीजें हम वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर, हम ये सारी चीजें प्रिपेयर कर चुके हैं। हमारे पास एलिवेशंस हैं, वी हैव क्रॉस सेक्शन, वी हैव एल सेक्शन, वी हैव डिटेल सेक्शन, सम डिटेल सेक्शंस आर आल्सो देयर, ठीक है? अब यस सर। क्वेश्चन ये है कि हमें इस शीट को कैसे बनाना है। तो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, लेट मी टेल यू। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपका जिस भी लेवल का प्लान ओके है, ठीक है? हम्म। फॉर एग्जाम्पल लेवल 3 का मैं यहाँ पे प्लान बनाना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करिए, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करिए एंड इसको ड्रैग करिए शीट की तरफ, विंडो में, ठीक है? ये आपका यहाँ पर प्लान आ गया। अब हम्म। इफ यू वांट टू स्केल इट, स्केल कर सकते हैं आप, इसको डबल क्लिक करिए इस पर। यहाँ पर बॉटम में देखिए टास्क बार में this हम्म। scale option is enabled. If you want to increase the size, you can increase, make it 200, let's say, okay? अच्छा। If you want to decrease or increase, it depends on you. Scale बड़ा करना है, right, छोटा करना है, you can हम्म। customize as well. Let's say I want 175, 1 is to 75 के scale पे I want to make it, right? So this is prepared. Double click at the center and then you can take it with the help of arrow keys as well, and you can move with the help of mouse as well. Now you can just set it like this, okay?
मैंने कुछ नहीं ओके किया, आई एम रिपीटिंग अगेन, और ये वाला लिंक अभी खत्म हो जाएगा, सो आई विल बी जॉइनिंग विद न्यू, यू विल बी जॉइनिंग विद न्यू लिंक। ठीक है, कंट्रोल जेड, आई दोबारा एम डूइंग, बताइए। कंट्रोल जेड। ओके, लेट अस join the new link. Okay, ओके ओके। let us join a new with the new link. Okay, Nipun, I'll explain there itself.